इनका 1992 के अंदर जिस ऑफिस में मैं सबसे पहले काम करता था, तो 94 में posterior implants किए गए upper right side पे, and they were about 16 millimeter long implants done inside the sinuses with absolutely no sinus left, with only 6 to 8 millimeters of residual bone. Those implants to date are hanging free inside the sinus with no sinus bone graft. 90s में कहाँ कोई हम graft करते थे, ये sinus lift करते थे, और वो perfectly stable और integrated implants थे. पर उन्होंने drill नहीं किया होगा, probably direct implants से sinus lift किया होगा. नहीं, sinus lift किया ही नहीं था, drill किया था, की थी, सब कुछ किया था, और implant अंदर ठोक लिए थे लगे हुए. Dreaded implants. सीधे implant. यहाँ पर कभी दिखाऊंगा तुम लोगों को मैं उसकी तस्वीर. पुराने लोगों ने सबने ऐसे किए. Now उसके अंदर होता क्या है? What happens and what will happen in this case? Now 7-8 millimeter bone है, उससे primary stability तो आ गई. अब बाकी implant जो है, which is let's say about 6-7 millimeter, वो sinus में free पड़ेंगे. और वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? Prone to infection हो सकता है. हो सकता है, लेकिन patient was asymptomatic, sinuses बिल्कुल clear थे. और वो क्यों होगा? Sterile environment में काम हो रही है. हमने होल करके एक OAF बना दिया ना, in other words, और उस OAF को हमने ब्लॉक कर दिया with the implant. So what technically actually happened was, over a period of time and years, उस implant के इर्द गिर्द एक नई Schneiderian membrane बन गई होगी. Sterile implant ही है ना, bone तो वहाँ नहीं बननी थी, because membrane perforate करके sinus में हम गए. तो दो implants ऐसे उसमें लटक रहे हैं, and what you call it, with no symptoms, and it is integrated. But the question that comes to our mind is, why do this when we can actually place 8-10 millimeter or 7 millimeter shorter implants in the residual 8 millimeter height जो available है? So उनका इतने लंबे इम्प्लांट होना और साइनस में स्टिकिंग करना हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया, कोई इंडिकेशन नहीं. प्लस आप क्लिनिकली या एकेडमिकली या एथिकली इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते. कल को कोई लेट्स जस्ट से दैट पेशेंट गोज समवेयर अब्रॉड और वो देखें उन्होंने कि व्हाट द हेल, व्हाई डिड योर डेंटिस्ट डू दिस. तो आपके पास कोई एकेडमिक या एविडेंस नहीं है टू सपोर्ट दिस, even though it's been what, more than 20-25 years since 26 years since it's successful. But आप justify फिर इसको नहीं कर सकते. So due to the rapid loss of bone in the posterior teeth, we've talked about that, we need to have sufficient bone to be able to place and integrate and hold a bone. An implant, I'm sorry. So one of the classification, this is a very old classification, ये मिश्की classification है, and ये थोड़ी सी अब outdated भी हो गई है, but why I prefer to actually address and tell this is that it's quite easy to understand. So they divided the sinus situation into 4 categories. The sinus augmentation 1, 2, 3, and 4. You go to any slide you want. So, what is the essay 1, 2, 3, and 4? So, in essay 1 situation, it's like that we have enough bone to simply just place an implant, normally without the need of an extra bone graft material, which means that we have roughly about 8 to 10 millimeters of bone from the alveolar crest to the floor or the base of the sinus.
In SA2, there is sufficient bone to secure the implant of the proper length and width. Now, in this procedure, in this way, the necessary bone for the implant is created by expanding the bone in width and height from within the implant site, thereby creating a new sinus floor. That means कि हमने, let's just say कि bone height और width available है, लेकिन हम चाहते हैं कि molar को replace करना है, first molar को, so I want to place, let's say, a 4.5 or a 5 millimeter with a wide platform implant there. Now, why do we want to do these things? Why do we want to place wider implants or narrower implants? इसके पीछे reasons क्या होती हैं? Selection of implants के ऊपर कोई आप लोगों ने discussion की? Wider ones in the back because they'll be because of the wider diameter, their load distribution. load distribution होती है. They जब masticatory load ज़्यादा होता है, it's better. So replacing prosthetic teeth over implants, do we actually make them just like the adjacent teeth? Prosthetic crown बन रहा है ऊपर या prosthesis बन रही है. So general understanding यही है कि आप एक narrower occlusal table रखते हैं compared to the adjacent molars and teeth. Now, it has less to do with load distribution, but has more to do with the prosthetic emergence profile. Now, what that means is, मैं हिम्मत करने लगा हूँ उनको कुछ तो टाइम मिट्टी जाएगी. So we have a ridge here with, let's say, now here if we need to place a premolar, a molar tooth, and we place a narrow implant here. Let's just say it has a 4.4 diameter collar on top. इसके ऊपर हमने ये abutment लगा दिया. अब इसका जो crown जो बनेगा, prosthetically, it has to have an emergence profile. What we mean by emergence profile is that how it will emerge from here and now in this case, what will happen? Now we will keep getting food impaction in these areas and the patient will constantly be troubled. So what's the other alternative? कहते हैं यार crown ऐसे बनाओ कि वो यहाँ से आके यूं आए. So what do we have here? Overhangs. So now let's just say that मुहिम ही है वैसे मार्कर्स की. So let's just say we have a similar situation here. And here we choose to actually use a 6 millimeter wide or 6.5 millimeter wide platform with a 5 millimeter diameter base implant. And its abutment would actually come like this. Now the crown on top of it will then come like so you have lesser black triangle
and a better emergence profile compared to here where you would have everything stuck. Now, having said that, what is the new trend and concept? Wider implant may be good in the context of what we're talking about, but the new research and the current trend are that if you have 8 millimeters thick wide bone, let's say in a lower first molar area, and you place a 5 millimeter diameter implant, so buccal and lingual, 8 millimeter width की बात करूँ, as in buccolingual width. So how much bone do you have around the implant? 1.5. 1.5. So we have 5 millimeters, 8 millimeters की डेढ़ इधर रहेगी, डेढ़ उधर रहेगी. Now उसके बरक्स मैं एक 4 millimeter का implant डालता हूँ उसके अंदर. उसके इर्द-गिर्द बोन कितनी होगी? 2 mm. 4, 2 So mm. what is a better option? Placing a 4 and having 2 1. So the general understanding now is कि बहुत wide, जो ultra wide भी implants आने शुरू हो गए थे ना, 5 by 5, 6 by 5, 6 millimeter diameter और 5 millimeter height या 6 millimeter height के ultra short, ultra wide implants. उनके पीछे यही problem थी कि the amount of bone covering the implant, कहते हैं अगर 4 millimeter bone surround कर रही है उसको, it is better than 2 millimeters. And less than 1 millimeter or 1.5 millimeter bone, buccal side पे it will resolve away. Bone resorption patterns पता है क्या होते हैं? Anyone know कि maxillary and mandibular bone resorption protocols क्या होते हैं? So let's just say somebody takes all the teeth out in the maxilla and all the teeth out in the mandible. How will the bone resorb from which area? So let's talk about the maxilla. कहाँ पे सारी bone resorb होगी? ज़्यादा होगी? So posteriorly first. Anterior में कहाँ होगी resorption? Labially, palatally? Labial. Mostly. So in the maxilla, all the resorption takes place on the labial and the buccal side. Palatal bone, stable bone. Dentures में कभी किसी ने पढ़ा है? जो primary stability areas और secondary stability areas होते हैं. Palatal bone resorb नहीं करती, बहुत कम करती है. Mandibular resorption patterns are very different. So क्या होता है? Anterior mandible में all the resorption is from the labial. Canine area में it is actually equal from the labial and the lingual. And posterior में, okay. So what actually ends up happening? I think you've been getting it the other way around. It's an unequal bridge, right? It's an unequal bone formation. Yeah. So the bone bridge has different areas of. The bone resorption patterns में posterior mandible में labially ही होगी. We're getting it the other way around. Canine और premolar region में both होती है और anterior में lingual aspect में होगी. Because हमारे ज़्यादा chin और इधर सामने stable bone होती है. Resultant क्या होता है कि the jaw shift in size, कि lower mandible सामने आ जाता है, frontwards, upper retrude करके पीछे चले जाता है. इसीलिए edentulous people जो है वो prognathous form में चले जाते हैं. हमें अंडरस्टैंड करना है कि जब आप posterior mandible में lower mandibular area में एक implant रखेंगे तो उसकी सारी resorption हो रही होती है buccal side से. So we need thick, good amount of bone on the buccal aspects. So lingual आपकी walls जो है वो सारी stable होती हैं. Posterior mandible की. So lingual bone stable होती है. वो resorb नहीं करती. सर posterior mandible में lingual ही होगी, right? Resorption. नहीं, buccal होती है. Buccal होती है. सारी resorption buccal side पे हो रही होती है. इसीलिए कई दफ़ा आप देखेंगे कि failing implants in the buccal aspect उसकी buccal 2, 3, 4 threads expose हो जाते हैं. आप X-ray लेते हैं तो आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है. But that is only and only the lingual bone
that is showing in a radiograph, which is a two-dimensional picture of a three-dimensional object. So the newer concept says you do not use ultra-wide implants. हम upper anterior में कितने diameter के implants use करते हैं ideally? 3.5. 4 mm. आप जब बहुत thin use करते हैं implants, thinner implant, फिर problem emergence profile की हो जाती है. So if you use narrower, is 8 mm की एक width आ जाती है central incisor adult male. So we want to have a 4 mm, 4.1 mm diameter in the center.